Hello students, welcome back to my channel Maths World. Now today we are going to continue with the chapter Operations on the Fractions, and in that we are going to learn the topic multiplication of fractions. So to multiplying two fractions we have to remember one rule which is given here. What is that rule exactly? When multiplying two fractions, the product of the numerator is written in the numerator and that of the denominator in the denominator. मतलब exactly क्या? While adding and subtracting the fractions, what we want exactly? We want the denominator same. We want the denominator should be same. But in the multiplication of fractions, doesn't matter whatever is the denominator. डिनोमिनेटर अगर दो फ्रैक्शंस का सेम नहीं है देन ओनली वी कैन मल्टीप्लाई दी फ्रैक्शंस एंड इन दैट मल्टीप्लिकेशन वी हैव टू राइट प्रोडक्ट ऑफ द न्यूमरेटर in the numerator and that of the denominator in the denominator. Let us solve it by taking one example. 1/2 multiplying by 3/4. So we have to multiply 1/2 and 3/4. So according to rule, when multiplying two fractions, the product of the numerator is written in the numerator. मतलब ये जो प्रोडक्ट है न्यूमरेटर्स का 1 and 3 का is written in the numerator only and that of the denominator in the denominator. मतलब डिनोमिनेटर का मल्टीप्लिकेशन कहाँ पे आएगा? डिनोमिनेटर में आएगा. Now it will be easy. We know the multiplication of 1 and 3. What is the multiplication? 3. Multiplication of 2 and 4 is 8. Here we have the answer. Let us take one more example. 11/9 multiplied by 5/2. So what we have to do? Multiplication of numerator is in the numerator only upon multiplication of denominator is in the denominator only. मतलब यहाँ पे no need to make the denominator same और यहाँ पे हम लोग को ये भी जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है वो भी करने का ज़रूरत नहीं है. Simply we have to multiply the numerators and the denominators. So multiplication of 11 and 5 will be 55/18. Let us take one more example. 4/3 multiplied by 12/2. So यहाँ पे multiplication of numerator is in the numerator and the multiplication of denominator is in the denominator only. So 12 4s are 48/3 2s are 6. Now here while finding out the answer, if we want to reduce the given fractions then we can reduce it. मतलब क्या? ये जो given fractions है ये given fractions को अगर same number से divide हो रहा है then can divide, otherwise no need to divide. Let us solve practice set 12. Question number 1, multiply. In that first question we have 7/5 multiplied by 1/4. Simply we just have to multiply the numerator upon multiply the denominator. 7 1s are 7 upon 5 4s are 20. Second question we have 6/7 multiplied by 2/5. So we have to multiply the numerators and multiply the denominators. So multiplication of numerator in the numerator only and multiplication of denominator is in the denominator only. 6 2s are 12, 7 5s are 35. Question number 3, 5/9 multiplied by 4/9. Now 5 into 4/9 into 9. 5 4s are 20 upon 9 9s are 81. Next, question number 4, 4/11 multiplied by 2/7. 4 into 2 upon 11 into 7. 4 2s are 8 upon 11 7s are 77. Fifth question,
1/5 multiplied by 7/2. So यहाँ पे भी multiplication of numerator in the numerator only and the multiplication of denominator is in the denominator only. 7/10. Sixth question, 9/7 multiplied by 7/8. Now यहाँ पे multiplication of numerator is in the numerator only and multiplication of denominator is in the denominator. 9 7s are 63 upon 7 8s are 56. Next question number 7. 5/6 multiplied by 6/5. So let us multiply 5 multiplied by 6/6 multiplied by 5, which will you get 30/30. So here if you observed, here we have the division 30 upon 30. So मतलब 30 को 30 से ही डिवाइड करना है, which will give me the answer 30 1s are 30. मतलब यहाँ पे आंसर क्या मिल रहा है 1. So here we have to write 1. Question number 8. 6/17 multiplied by 3/2. So multiplication of numerator upon multiplication of denominator. 6 3s are 18, 7 2s are 34. So here we have the answer. Next, अगर if you want to reduce this fraction, so how to reduce it? 18 and 34 को सेम नंबर डिवाइड कर रहा है कि नहीं चेक करो. Yes, 18 को डिवाइड कर रहा है 2 and 34 is also divide by 2. So if we divide 18 by 2, 18 by 2, we get the answer to 9s are 18 and the remainder 0. मतलब मुझे यहाँ पे मिलेगा 9. Also if we divide 34 by 2, so we get the answer to 1s are 2, remainder 1, 4 comes down, 4 7s are 14 and here we get the answer 17. मतलब final answer we get is 9/17. In this way we have to reduce the fractions. Question number 2 we have Ashok planted bananas on 2/7 of his field of 21 acres. What is the area of the banana plantation? That means Ashok has 21 acres of field and among that field 2/7 पार्ट में उन्होंने बनाना प्लांट की है. सो एक्चुअल जो पार्ट है जो एकर्स में आएगा वो हम लोग को फाइंड आउट करना है. सो हाउ टू फाइंड आउट? टू स्टार्ट विद द सॉल्यूशन. टोटल फील्ड is equals to 21 acres. Next, Ashok Rao planted bananas on 2/7 of his field. So what we have to find? Area of the banana plantation. So एरिया फाइंड करने के लिए व्हाट वी हैव टू डू, टोटल एरिया कितना है 21 एकर्स है, उसमें से 2/7 पार्ट में उसने बनाना प्लान की है. दैट मीन्स वी हैव टू फाइंड 2/7 पार्ट ऑफ 21. व्हाट इज वी हैव टू फाइंड 2/7 part of 21. That means we simply have to multiply. So let us multiply. अभी यहाँ पे 21 का डिनोमिनेटर इज 1, कुछ नहीं मतलब क्या होता है ऑलरेडी 1. So we have to multiply the numerators and the denominator. 21 2s are 42/7. इसको रिड्यूस करते हैं. So if we divide 42 by 7, we get 7 6 are 42, remainder is 0. That means the answer we get 6 acres. मतलब उसने कितने एरिया में बनाना प्लांटेशन किया? 6 acres में बनाना प्लांटेशन किया. Third question we have, of the total number of soldiers in our army, 4/9 are posted on the northern border and 1/3 of them on the northeastern border.
if number of soldiers in the north is 5,40,000, how many are posted in northeast? So let us start with the solution part. So first of all, try to understand the questions. Suppose these are the four boundaries of the country, and among that four boundaries, this is the north, this is the south, this is the east, and this is the west. So question में क्या दिया है? Of the total soldiers in our army, 4/9 are posted in the northern border. मतलब जो टोटल है उसमें से 4/9 जो है वो नॉर्थन में है. कितने हैं? 4/9. दैट मीन्स टोटल 4/9 ऑफ टोटल जो है वो नॉर्थन बाउंड्री पे है. एंड वो काउंट कितना दिया है? 5,40,000. मतलब नॉर्थन बाउंड्री पे 5,40,000 सोल्जर्स हैं. ना उसमें से 1/3 ऑफ देम आर ऑन द नॉर्थ ईस्टर्न बॉर्डर. मतलब ये हम लोग का है नॉर्थ ईस्टर्न बाउंड्री. एंड ये जो 5,40,000 है उसमें से 1/3 जो पार्ट है आर्मी का वो नॉर्थ ईस्टर्न बाउंड्री पे है. एंड वो काउंट कितना है वो हम लोग को फाइंड आउट करना है. सो लेट अस स्टार्ट विद द सॉल्यूशन पार्ट. पहले जो गिवन है वो हम लोग लिख लेंगे. Soldiers in the north border is equals to 5,40,000. Now among that 5,40,000, 1/3 part of the army is on the northeastern part. So यहाँ पे हम लोग को लिखना है 1/3. That means 1/3 of them on the north eastern border. जो 5,40,000 है जो नॉर्थन बॉर्डर पे है उसमें से 1/3 ऑफ देम आर ऑन द नॉर्थ ईस्टर्न बॉर्डर. सो हम लोग को फाइंड आउट करना है हाउ मेनी आर पोस्टेड इन द नॉर्थ ईस्ट बॉर्डर. सो यहाँ पे हम लोग को लिखना होगा नंबर ऑफ सोल्जर्स ऑन द नॉर्थ ईस्टर्न बॉर्डर इज इक्वल्स टू 1/3 ऑफ 5,40,000. क्या किया हम लोग ने? 1/3 ऑफ 5,40,000 किया. वाई? बिकॉज नॉर्थ बॉर्डर पे थे 5,40,000 एंड उसमें से 1/3 पार्ट जो है वो नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में है. सो इसलिए वी हैव टू फाइंड 1/3 मल्टीप्लाई बाय 5,40,000. सिंपली व्हाट वी हैव टू डिवाइड 5,40,000 by 3 because 1 into 5,40,000 will be 5,40,000 and इसका डिनोमिनेटर कुछ नहीं मतलब क्या होगा? ऑलवेज 1. so 3 into 1 will be 3. so if we divide 5,40,000 by 3 we get 3 1s are 3, 3 4s are 12. हम लोग डिवीजन करके देखते हैं. सो क्या है? 5,40,000 डिवाइड बाय 3. 3 1s are 3, remainder 2, 4, then 3 8s are 24, remainder 0. एंड ये जो 4 zeros है वो ऊपर आएंगे 1 2 3 4. मतलब मुझे आंसर क्या मिल रहा है? 1,80,000. So here we have the answer. 1,80,000 soldiers are posted in the northeastern boundaries. That's all for today's video. If you like my video, share to your friends and subscribe to my channel. Thank you.